अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दिस इज ईशान बशीर, वेलकम टू स्टेम इंटरनेशनल पब्लिशर्स। टुडे वी आर गोइंग टू सॉर्ट द एक्सरसाइज ऑफ यूनिट 13 फ्रॉम बुक 4। देखते हैं कि एक्सरसाइज के क्या कंपोनेंट्स हैं। लेट्स सॉर्ट इट आउट। जी तो डियर स्टूडेंट्स, नाउ टर्न टू पेज 111. Circle the correct answer. What is the firing day mentioned in the text? Second is the right option, a day when they bake pottery in the kiln. What special items are made by Mama for festivals? 3 is the right option, clay decorations. In what order did Raza and Baba prepare the clay after bringing it home? Second is the right option, break, sieve, knead. How does the author convey the idea that pottery is important to the family's daily life? 4 is the right option, all of the above. How did Raza get the umbrella for his father? Second is the right option, he helped an old man and got it in return. Read the different events from the story. कहानी के मुख्तलिफ events को पढ़ें. Use B and A to mark which event happened before B and which event happened after A. The events given. Raza helped Baba break the dried clay into small pieces and knead it with water. Dada and Raza went to the river to dig up the clay. A. Baba and Dada shaped the clay into pots on the wheel. B. Now turn to page 112. Even 2. Raza got an umbrella for Baba by helping an old man. Raza shared his experiences with Mama and Samra. B. Baba and Raza sold all their pots and toys at the market in the city. A. Answer the questions. How do you know that Raza started learning about clay when he was young? Answer is because it was his family business. He has been observing since his childhood. What did Mama say about potter's hands? How was this true in the story? Mama said potters have special hands that turn clay into wonderful things. What did Raza and Samra enjoy doing with the wet clay? Why? They love to play with clay. They jump on wet clay and make little objects. How do we know that Mama is a skilled potter? Because she makes pots and decorative things with clay. Raza and his family watched the sky turn pink and orange, ready for another day of pottery. Describe the task that Raza and his family will do again the next day. They will dig the clay, then break, sieve and knead it. After that, they will make different things. Think and answer. A writer uses imagery to help the reader to imagine what is being described. इमेजरी का इस्तेमाल किया जाता है ताकि रीडर जो है वो सोच सके, ताकि वो तख़य्युल में ला सके जो कुछ भी राइटर उसको बताना चाह रहा है. द राइटर यूजेस वर्ड्स टू इवोक द सेंसेस ऑफ साइट, साउंड, टच, स्मेल एंड टेस्ट टू डिस्क्राइब थिंग्स. जो राइटर है वो मुख्तलिफ चीज़ों का इस्तेमाल करता है जैसे कि साइट, साउंड, टच, स्मेल एंड टेस्ट, ताकि वो चीज़ों को बयान कर सके. इट मेक्स स्टोरीज मोर विविड एंड एक्साइटिंग. इससे कहानियाँ मज़ीद वाज़िया हो जाती हैं. For example, the golden, it's a sight word. Sun, warmed, it's a touch word. The soft, it's a touch word. Green, it's a sight word. Grass. Match the events and imagery that best describe them. अब हम events को sensory details के साथ मैच करेंगे. Raza loved the cool touch of clay in summer, feeling the wet coolness when it was hot outside. He and Samra loved jumping on the wet clay, which made a funny sound, hearing it squish and squelch under their feet. Baba and Dada shaped the clay into pots on the wheel as if by magic. Seeing a pot appear from a lump of clay, they made tea in a big clay pot and watched the sky turn pink and orange, seeing the beautiful colors of the sunset. Raza excitedly shared his experiences with Mama and Samra, hearing Raza's voice babbling away. Now turn to page 113. Read Raza's actions. How do you think his actions affect the other characters? रज़ा के कामों को पढ़ें और आपको कैसे लगता है कि रज़ा के काम दूसरे लोगों को अफेक्ट कर सकते हैं. What do these actions tell you about Raza?
और रजा के काम आपको क्या बताते हैं? रजा मेड एन आउल फॉर समरा एंड अ टॉय कार फॉर हिज ब्रदर. Effect on qualities shown: Samra and his brother hugged Raza. Other characters by Raza: thoughtful, caring. Raza helped Baba break the dried clay into small pieces, sieve it and knead it with water. His father hugged him. He helped his father, caring, responsible. Raza helped an old man with some work and got an umbrella for Baba. He shows his love and his father hugged him warmly. Caring, thoughtful. Big idea. Think about a time when you did something special for someone or helped a family member with something they were doing. Dear students, it is your class based exercise. आपने किसी ऐसे काम के बारे में सोचना है जो काम आपने अपनी फैमिली वालों के लिए या किसी दोस्त के लिए ऐसा किया हो, उनकी मदद करने के लिए. एक्सप्लेन व्हाट यू डिड. जो आपने किया उसको एक्सप्लेन करें. हाउ डिड यू फील, आपने क्या महसूस किया. हाउ डू यू थिंक द पर्सन whom you helped felt, जिसकी आपने मदद की उसने कैसा महसूस किया. व्हाट डिड दे से, और उन्होंने आगे से क्या कहा. यू कैन टेक गाइडलाइन ऑफ योर टीचर. आपने ये अपनी कापियों पे कंपोज करना है कि आपने कैसा एक्सपीरियंस किया. रीड द फ्रेजेस बिलो, रिप्लेस देम विद द करेक्ट वर्ड्स इन द बॉक्स. फ्रेजेस पढ़ने हैं और अल्फाज के साथ इनको चेंज करना है. जैसे कि फर्स्ट, अ पर्सन हु राइट्स स्टोरीज, ऑथर. अ पर्सन हु प्लेज म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, म्यूजिशियन. A person who makes statues, sculptor. A person who performs in plays, actor. A person who makes clay pots, potter. Now turn to page 114. Collocations. Collocations are pairs or group of words that often go together. Collocations उन अल्फाज को कहते हैं जो pairs के अंदर होते हैं और इकट्ठे ही इस्तेमाल किए जाते हैं. They can be thought of as word partners, और इनको word partners भी तस्वुर किया जाता है. जैसे कि we say make a decision and not do a decision. We say fast food and not quick food. We say strong coffee, not powerful coffee. Circle the correct collocation for each sentence. The artist wanted to paint and design a portrait of his grandmother. My sister likes to write and do poems in her free time. We learned how to make and design clay figures in art class. Can you help me build and design a costume for the school play? The art teacher showed us how to find and blend colors to make new shades. Go grammar. Tenses. Remember, we use different verbs forms to show the time of an action. हम मुख्तलिफ time of action को show करने के लिए मुख्तलिफ verbs का इस्तेमाल करते हैं. A verb form that shows time is called its tense. Time of action में जो verb इस्तेमाल किया जाता है वो मुख्तलिफ इक़साम का होता है और इसी को tenses भी कहा जाता है. Types of tenses कौन से हैं? Simple past, simple present, simple present. It is used to talk about actions happened in the past. Simple past tense में जो फ़िक्रे इस्तेमाल किए जाते हैं वो माजी के बारे में बताते हैं और इसमें second form of verb इस्तेमाल की जाती है. For example, as a baby he played with lumps of clay. Time words: yesterday, last week, a month ago, once upon a time. Simple present is used to talk about habits or actions that are generally true or happen daily. रोज़मर्रा के काम का हालिया अगर हाल आपने बताना हो तो उसके लिए हम सिंपल प्रेजेंट इस्तेमाल करते हैं. इसमें हम बेस फॉर्म वर्ब की इस्तेमाल करते हैं और साथ ही एस और एस का इजाफा किया जाता है अगर ही, शी या इट एज सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल हो तो. फॉर एग्जाम्पल, potters shape the clay. Raza shapes the clay. Time words: every day, always, usually, generally, sometimes, never, ever. Simple future. It is used to talk about actions that will happen in the future. Simple future के अंदर सिंपल फ्यूचर में हम आने वाले वक्त में किसी काम का जिक्र करते हैं और इसमें विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल की जाती है. फॉर एग्जाम्पल, दे विल रिटर्न टुमारो, वो कल वापस आएंगे. टाइम वर्ड्स: टुमारो, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट ईयर, इन 2050, दिस आफ्टरनून. इर्रेगुलर वर्ब्स: वर्ब्स दैट डू नॉट टेक ईडी इन द पास्ट टेंस आर कॉल्ड इर्रेगुलर वर्ब्स. डियर स्टूडेंट्स, इर्रेगुलर वर्ब्स उन वर्ब्स को कहते हैं जिनकी दूसरी और तीसरी फॉर्म बनाने के लिए ईडी का इस्तेमाल नहीं किया जाता बल्कि वो इटसेल्फ एक नया लफ्ज़ होता है. फॉर एग्जाम्पल, दे सोल्ड ऑल देयर पोट्स एंड टॉयज. सेल, सोल्ड, सोल्ड. ठीक है, इसमें सेल्ड नहीं इस्तेमाल किया गया.
Now turn to page 115. Label the sentences as past, present or future. The family will continue the work tomorrow. It's future. Raza will go to the city with Baba tomorrow. It's future. Raza and Samra jumped on the wet clay. It is past. Raza always loves to go to the big city. It is present. Fill in the blanks with the correct verb forms. They went to the market last week. Mama will make clay diyas tomorrow. Raza watches the sun come up each morning. Yesterday Samra designed a beautiful dress. Correct the verb forms and rewrite the sentences. Yesterday Raza dug for clay with Dada. Next month Rabia will visit an art exhibition in Lahore. Modern sculptors usually uses polymer clay. Subject verb agreement. In a sentence a verb should match with or agree with the subject in number, singular और plural. ये students किसी भी फिक्रे के अंदर subject को अपने verb के साथ मैच करना बहुत ज़रूरी होता है. It is called subject verb agreement. इसी को subject और verb का agreement कहा जाता है. जो आप verb put करते हैं उसको according to subject होना चाहिए. If the subject is singular, अगर subject singular है the verb will also be singular, तो verb भी singular होगा. That is the verb form will be verb plus s or es. If the subject is plural, अगर subject plural है the verb will also be plural, तो उसका जो verb है वो भी plural होगा. Subject type one person, animal or thing. Verb form singular. Example Aisha loves to read books. More than one person, animal or thing, plural. The students play football in the evening. Now turn to page 116. An uncountable noun singular. Water flows in the river. A collective noun singular. The team is practicing for the match. Subjects joined with and plural. Ali and Sarah enjoy painting together. Subjects joined with or, either or, neither nor, singular or plural depending on the noun closest to the verb. Either the teacher or the students are responsible for cleaning the classroom. Singular pronouns singular. Singular pronouns like each, nobody, everybody, every, singular. Everyone wants to be successful. Plural nouns like several, many, few, a few, both, plural. Many children love ice cream. When there or here is used, the subject comes after the verb. Singular or plural. Here is a library. There are books on the table. When using some, singular or plural, some flour is left, some cakes are left. Write the correct verbs that agree with the subjects in the sentences. हमने sentences में subject के accordingly सही verbs को put करना है. Honesty is the best policy. Each of the students reads a new book. Neither the teacher nor the students clean the classroom. The boy and his sister plan a birthday party. A few workers arrange the decorations for the event. Correct and rewrite the sentences. A cat and its kitten play in the garden. A pile of books is on the table. Now turn to page 117. Both of them were excited about the trip. Neither Ali nor his friends were late for school. There are many birds in the sky. Fill in the blanks with the correct verb forms. इन अल्फाज को पुट करके हमने ब्लैंक्स को फिल करना है. The school principal announces that the student with the highest grades will receive an award. The students cheer in excitement. They all see their report cards to the teacher. Each student waits to hear their name called. The principal chooses the top student and brings the trophy to him. Speak well. Sit in pairs. Read the conversation between two people discussing a painting and how it can be made better. डियर स्टूडेंट्स, आपने दो लोगों का पेयर बनाना है और एक पेंटिंग बना के उस पर डिस्कशन करनी है कि ये पेंटिंग कैसी बनी है और इसको कैसे बेहतर किया जा सकता है. दिस पेंटिंग इज़ ब्यूटिफुल. डिड यू ड्रॉ इट? यस, प्लीज़ गिव मी सम सजेशंस टू इम्प्रूव इट. हाउ अबाउट यूजिंग सम ब्राइटर कलर्स? दैट्स अ ग्रेट आइडिया, थैंक यू. अदर एग्जाम्पल्स आर हियर. डियर स्टूडेंट्स, इट इज़ योर क्लास बेस्ड एक्सरसाइज. आपने अपने टीचर की गाइडलाइन से पेयर्स में ये एक्सरसाइज करनी है और पेंटिंग बना के उस पर रिव्यूज़ देने हैं और सजेशंस लेने हैं अपने दोस्त से. नाउ टर्न टू पेज 118. लुक एट द पेंटिंग और ड्राइंग योर पार्टनर डिड ड्यूरिंग आर्ट क्लास और
Imagine that your partner did one of the illustrations in your English course book. Give suggestions to improve it. अब आपने क्या करना है कि जो पेंटिंग आपके दोस्त ने बनाई है उसके अकॉर्डिंगली आपने उसको सजेशंस देने हैं कि कैसे वो उनको बेहतर कर सकता है। इन सेंटेंसेस का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। आई रियली लाइक योर पेंटिंग, हाउ अबाउट डैश, यानी कि इसमें आप अपने अपने सजेशंस देख सकते हैं कि आप उसको क्या सजेशन देना चाहते हैं। यू कैन टेक गाइडलाइन ऑफ योर टीचर, राइट वेल। अहमद एंड निदा आर टॉकिंग अबाउट अ स्कल्पचर। अहमद और निदा एक स्कल्पचर के बारे में आपस में बातें कर रहे हैं। कंप्लीट द कॉमिक स्ट्रिप बाई एडिंग द डायलॉग। अब हम इन डायलॉग्स को पूरा करते हैं। हाई निदा, लुक एट माई न्यू स्कल्पचर, आई एम ट्राइंग टू मेक अ ड्रैगन। वो अहमद, इट लुक्स ब्यूटिफुल। थैंक्स निदा, आई यूज्ड क्ले। दैट्स रियली कूल, डिड यू लर्न इट? येस, आई लर्नड फ्रॉम माई फादर। योर ड्रैगन लुक्स अमेजिंग। Thank you Nida, you should also try. Yes, I am trying. So dear students, it was all about the exercise. जी तो डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि सारी एक्सरसाइज के कंपोनेंट्स आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। जहाँ पे क्लास वर्क या होमवर्क होता है आप अपने टीचर से भी गाइडलाइन ले सकते हैं। मिलते हैं नए यूनिट के साथ अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।